अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल बोनसाई आर्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और गर्मी का मौसम खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप दोस्तों को पीपल के बोनसाई की प्रूनिंग, लीफ प्रूनिंग और वायरिंग के मुतालिक बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीपल की रिपोर्टिंग के मुतालिक बताऊँगा। आप गमले में जो पौधे देख रहे हैं, मैंने इनकी कटिंग फरवरी 2024 में लगाई थी और अल्लाह का शुक्र है कि इन दोनों कटिंग्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और नए पौधे लगाने, इनको रीपॉट करने और पौधों की कटिंग लगाने के लिए इंतहाई मौजू है। तो आज मैं इन दो पीपल के पौधों की रीपॉटिंग करूँगा, यानी कि इनको दो अलग गमलों में लगा दूँगा। सबसे पहले मैं इनकी लीफ प्रूनिंग करूँगा और बड़े साइज़ के पत्ते काट दूँगा। पत्ते काटने के बाद मैं इनकी सूखी टहनियों को भी काट दूँगा। और हल्की सी ब्रांच प्रूनिंग भी कर दूंगा ताकि इनसे नई शाखें निकल आएँ और पौधे घने हो जाएं और बोनसाई बनाने के लिए मौजूद पौधे तैयार हो जाएं। कटिंग के बाद अब मैं गमले को उल्टा करके हल्का सा किसी ठोस जगह पर ज़र्ब लगाऊंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ज़र्ब लगाने से रूट बॉल गमले से बाहर आ गया है और अब मैं दोनों पौधों को अलग कर दूंगा और जड़ों को मिट्टी से साफ़ कर दूंगा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।